ये भर्ती की बात होनी चाहिए, ये सब आरोग्य की बात होनी चाहिए, ये सब बात होनी चाहिए। Saurashtra, also called Kathiawad region. In all its 11 districts, 75% of its 48 seats fall in the rural belt of Saurashtra. And Khedu, or farmers, comprise a big chunk of the voters here. Cotton and groundnut, mostly grown in the region. The farmers here, traditionally Congress supporters. It is this tradition that the BJP wants to change this time. I meet the members from RSS affiliate Bharatiya Kisan Sangh, well entrenched in Saurashtra, farmers themselves, and to my surprise, very angry with the BJP government in Gujarat. सबसे बड़े खेडूत का मुद्दा है जो एक तो ये गुजरात सरकार ने ये जो जमीन का रिसर्वे किया है, वो रिसर्वे में बड़ा फॉल्ट किया है। वो खेडूत को बहुत दिक्कत है इसके लिए, तो इसके लिए हम बोलते हैं कि ये सरकार का बहुत बड़ा फॉल्ट है। और दूसरा जो ये किसान संघ 48 दिन गांधीनगर में लड़त किया, तो उसने मेन मुद्दा था उसका एक वीज दर समान, और दूसरा खेडूत का जो ट्रैक्टर बोलते हैं उसका गाड़ा बनाने का, उसका टैक्स माफ करने का बहुत प्रश्न है। उसमें भी सरकार ने बहुत ध्यान नहीं दिया है। इस बार क्या जो खेडू है, किसान है, क्या वो सरकार से नाराज है? हाँ, बहुत नाराज है, बहुत नाराज है। भाजपा सरकार से अभी बहुत नाराज है। मैं 1995 में मैं मेरे गांव का सरपंच था, जब भी ये जो उसकी शुरुआत थी भाजपा की, जब भी मैं भी कांग्रेस में से निकल के भाजपा में गया और हमने अच्छा दिखता था कि भाजपा अच्छा काम करेगा, लेकिन उसने अच्छा काम कुछ नहीं किया है। वो बताता है ये करने का, उसने अभी तक ऐसा 307 निकाला, अभी 330 है, अभी नहीं निकाला है। तो दोनों साथ में क्या नहीं निकाला? किसान जो है, जो खेडू है, वो क्यों नाराज है इस बार सरकार से? खेडूत नाराज है, समान वीज दर और ये जमीन का रिसर्वे किया है। रिसर्वे में बड़ा फॉल्ट किया सरकार ने, गुजरात सरकार ने, इससे लिए नाराज है। और जो खेडूत को जो एपीएमसी का बाजार है वो समान दर से नहीं चलती है, उससे भी बहुत नाराज है खेडूत। आप भी फिर आरएसएस से जुड़े हैं, भाजपा से जुड़े हैं, पर आप सरकार से, भाजपा से नाराज हैं गुजरात में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा आए या कांग्रेस आए या आप आए, वो सब एक मिले हुए हैं। हम तो दिल से ये चाहते जो भी आए, लेकिन किसान के लिए कुछ अच्छा करे ऐसा आना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की किसान हीड़ है। जब किसान है तो सब कुछ है, बाकी किसान के बिना उद्योग भी कम है, वो नहीं चलेगा। अगर किसान नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, अनाज नहीं है, हम अपनी सब फैसिलिटी के बिना चलेंगे, लेकिन हम अनाज के बिना नहीं चल सकते। वो अनाज पैदा जो किसान करते हैं, जो किसान का काम करता है, वो आए तो किसानों के लिए, देश के लिए। कौन सा सरकार हित में है आपको लगता है किसान? मैंने बोला कि सब ऐसा ही है, एक ही सब है, सब एक समान ही है। लेकिन कहना चाहता हूँ कि हम प्रेशर करना चाहते हैं कि जो लोग किसान के लिए कुछ सोचे। गुजरात की बात करें तो 27 ईयर्स से गुजरात में भाजपा की सरकार काम कर रही है। नरेंद्र मोदी साहब ने जब गुजरात की गादी संभाली, इसके पहले हमारे केशुभाई पटेल थे, उन लोगों ने किसानों का बहुत तो काम किया है, वो भी भाजपा के थे। नरेंद्र मोदी आए तो उसने भी गुजरात का बहुत विकास किया, उद्योग का विकास किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी के जाने के बाद जो भी आगे वानो है, उसकी कहीं न कहीं दीर्घदृष्टि का अभाव है। जमीन है आपकी? जमीन है, लेकिन हमारी जमीन छीन गई है व्याजंगवाद से, और हम 8 साल से प्रयास कर रहे हैं न्याय पाने के लिए। लेकिन ये तीनों पक्ष जो अब आए हैं ना मार्केट में, मार्केट में ही कहेंगे ना, किसी ने न्याय, खेडूत को न्याय मिलेगा ऐसा कोई उसके बारे में कोई बात ही नहीं किया है। 8 साल से मैं जजूम रहा हूँ और मेरी जमीन व्याजंगवाद से छीन गई है। ये सब पार्टी जो अभी सरकार है ना, ये लोकशाही को कठपुतली बना दिए, कठपुतली और नचा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर भी मोदी साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मेरा सवाल है क्या मुमकिन है, सच्चाई पे पर्दा या सच्चाई उजागर?
तो अगर सच्चाई उजागर, मैं मानता हूँ सच्चाई उजागर मोदी साहब है तो मुमकिन है, सच्चाई उजागर यही होना चाहिए, लेकिन ये बाबत में ढांक पिछड़ा हो रहा है। अब तो हमें दिल से आता है झाड़ू के संग जाए, झाड़ू के संग, झाड़ू के संग जाए। क्यों? सफाई तभी होगी झाड़ू के संग, झाड़ू के संग, झाड़ू ही सफाई कर सकता है। ये भ्रष्टाचार क्यों लगता है? अरे किसी ने ये बोला कि हम बिजली फ्री देंगे, फ्री की बात हुई तो तुरंत रेवड़ी की बात करने लगे। Elections are a peculiar time. You can always expect the unexpected. RSS-affiliated farmers in Amreli will vote against the BJP for the Aam Aadmi Party. उसमें भी सरकार ने बहुत ध्यान नहीं दिया है। But in Surendranagar, Kishan Bhai and his wife Shanti Ben, with over 7 acres of groundnut producing land, in 2017 they voted for the Congress, but regret it now. For them, from now, it is only Modi. कौन चुनाव में कौन पसंद है? मोदी। मोदी। क्यों? अच्छा, मोदी क्यों पसंद है? मोदी क्यों पसंद है? હવે તો ક્યું પસંદ? કામ હારા બહુ કરે મોદી, ખેડૂ માટે બહુ હારા કામ કરે। મોદી ચાલશે, મોદી, અમે મોદી જ પ્રિય। मोदी प्रिय है। ભગવાન બરોબર છે મોદી। भगवान बरोबर। क्यों भगवान बरोबर? મોદી એવા કામ એવા કરે। काम वैसा करते हैं कि भगवान बराबर है હા, मोदी। ભગવાન બરોબર છે, અવતારી પુરુષ છે મોદી। એટલા કામ ખેડૂ ના કરે। बहुत काम किया है। બહુ પાણી એટલું હરિયાળી ગુજરાત કરી દીધી। पानी ले आए, पहले नहीं था। નહીં, It's interesting when you get onto these words. This woman in her very broken Hindi, or rather my broken Gujarati, told me Modi Bhagwan Saman. Modi is like God. And that's quite, the reason why wherever we are going, if there are many factors, there's an X factor. And the X factor is Prime Minister Modi. With that, we leave the battleground that will vote in the first phase. En route passing through in Rajkot towards central Gujarat, we tap into the mood of the voter that forms the backbone of Gujarat, the Vyapari, trader. Rajkot is the biggest imitation jewelry market in the country. From scratch to finish, jewelry that looks like gold and silver is produced here. The political mood deeply divided. Alpesh Patel is a big player in the B2B segment here, from making jewelry to supplying it. मार्केट तो समझ लो कि राजकोट तक सीमित नहीं रहा है। ये मार्केट मैन्युफैक्चर है, B2B मार्केट है, पूरा होलसेल मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट है। और यहाँ पे लोग बाहर से ना कि माल लेने आ रहे हैं, बस अपना कारोबार विद फैमिली कारोबार करने के लिए इधर से ऊपर आप दिल्ली लो, साउथ लो, कलकत्ता लीजिए, MP लीजिए, वहाँ से लोग इधर अपना ब्रांचेस डाल रहे हैं। ये मार्केट ना कि भारत तक सीमित है, यहाँ पे नेपाल, श्रीलंका, अपना अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आजू बाजू के काफी एशियन कंट्री में माल जा रहा है, अफ्रीका तक माल अपना जा रहा है। अभी लोग समझ लो कि ऐसा नहीं है कि भाई गोल्ड की कैपेसिटी नहीं है, जो गोल्ड नहीं ले पा रहे, आराम से ले पा रहे, वो लोग भी एक फैशन ज्वेलरी के तौर पे इस पे मानने लगे हैं। और जो मतलब प्रसंग होते हैं, तो प्रसंग और शादी होती है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई पहले की तरह गोल्ड ही पहनते हैं, अभी इमिटेशन ज्वेलरी भी पहनते हैं। चाइना को टक्कर दे रहे हैं या चाइना को टक्कर तो दे ही रहे, समझ लो, मैं खुद भी दे रहा हूँ अभी। और क्योंकि देखो चाइना में 2 प्लस पॉइंट है, चाइना में डिजाइनिंग में और लुकिंग, फिनिशिंग, उस सब में क्वालिटी में वो आगे। और ऐसा भी नहीं कि भारत का काम पिछड़ा हुआ, भारत में भी लोग माल अभी बनाने लगे हैं, अच्छा माल बनाने लगे। हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे इधर लेबर चाइना से सस्ती है और मैन्युफैक्चरिंग में हम भी काफी हद तक माल बना सकते हैं। गवर्नमेंट में डिमांड ये है कि बड़ी जो मशीनरीज है, जो इनोवेशन जो चाइना के पास है, वो हमारे पास इधर डायरेक्टली कोई पर्सनली कोई नहीं ले पाएगा। अगर CFC सेंटर हमें मिल जाए तो उसमें उधर जॉब हम करवा के हम चाइना को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि उसकी मशीनरी करोड़ में होती है।
बहुत सारी महिलाएं आपसे जुड़ी हैं इस काम में, ऑलमोस्ट महिला तो बहुत ज्यादा काफी ज्यादा बहुत महिलाएं ज्यादा। जुड़ी। और हमें ये गर्व है कि महिला जुड़ी है। उनसे क्या है कि कोई विधवा जो स्त्री है वो घर से बाहर समझ लो निकल पाए ना निकल पाए, क्योंकि उसको घर भी संभालना होता है, ये भी पैसे भी आवक भी पैदा करनी होती है। तो हमारे से वो माल लेके घर पे अपने बैठ के अपनी सामान से बिजनेस कर सकती है और कर रही भी है। राजकोट में मेरे हिसाब से हमें कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। क्या अभी इसके ज्यादा के क्या कोई हीरे अपने मकान पे कोई हीरे जेवरात टांग जाए क्या? अच्छा है, गवर्नमेंट समय व्यापारियों की मदद कर रही है सरकार। हाँ कर रही है, व्यापारी खुश हैं, सपोर्ट दे रही है। ये जो इससे जो आप जुड़ी हैं, इससे आपको हेल्प मिलती है फाइनेंशियली? हाँ, बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। महीने के मैं 10-12 हजार यहाँ से कमा लेती हूँ। 10-12 हजार कमा लेती हाँ, हैं? यहाँ से 10-12 हजार कमा लेती हूँ। यहाँ की सैलरी है, फिर हम शाम को जब घर जाते हैं तभी यहाँ से काम लेके जाते हैं और शाम को भी करते हैं काम। अच्छा, घर पे भी काम घर के भी करते हैं, यहाँ से ही लेके जाते हैं हम। यहाँ से घर पे काम करते हैं। यहाँ से बहुत हेल्प मिलती है। घर डालती हैं? हाँ, वोट डालती है ना। वोट तो डालना ही पड़ेगा ना। सही है। क्या सोच के वोट डालते हैं? ऐसे ही बस हम किसी को भी देंगे तो कोई सरकार आएगी तो हमें भी वो भी मदद करेगी। कैसा गुजरात चाहते हैं? स्वच्छ, अच्छा, हमको कोई भी प्रॉब्लम हो तो सरकार हमको मदद करे। जैसे मोदी जी है वो हमको मदद करते हैं। वो लॉकडाउन में बहुत हमको मदद की है। लॉकडाउन में मदद की। क्या मदद मिली आपको लॉकडाउन में? वो हमारे खाते में जो 1500 रुपये डाले थे उसने मेरा पहले फ्री का खाता उसने खुलवाया। हमारे मोदी जी ने हाँ, मोदी जी ने फ्री का खाता खुलवाया था। फिर उसमें लॉकडाउन में 500 रुपये, फिर 1000 रुपये ऐसे करके फिर हमें राशन मुफ्त में देते हैं। किस सरकार से खुश हैं? मोदी जी? हम तो मोदी जी से ही खुश हैं। For him, it's allegiance to the BJP. गुजरात की राजनीति तो मोदी साहब ने बहुत बढ़िया काम, रोड रास्ता ये सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो एयरपोर्ट इधर राजकोट को हमको दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एम्स भी हमको राजकोट में मिल गया। अहमदाबाद, राजकोट से लेके अहमदाबाद 6 लेन रोड बनवा दिया। बहुत प्रगति कर रहा है। सब लोग इधर का जो उम्मीदवार है उसको देख के मत नहीं देते हैं, जब मोदी को देख के मत देते हैं। उम्मीदवार को कोई नहीं देखता? नहीं, मोदी आपका सब कर रहे हैं तो उसको ही देते हैं। कि भाजपा है, मोदी है, उसको ही देते हैं। इस बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी कुछ कर पाएगा? कर पाएगा, पर उसका क्या है? कौन सा कर पाएगा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? दोनों का भी वर्चस्व ज्यादा ही है, क्योंकि उसको सीट आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं है, आएगा। दोनों को आएगा? आएगा ही, पर उसको ये क्या कर लेगा? 5 सीट आएगा, 10 सीट आएगा, तो उसको कुछ नहीं होगा। क्या होगा? वो पूरा दिल्ली तक का जो But Vallabhbhai Patel, who owns the store where Alpesh supplies his jewelry, is unhappy, angry, disappointed. सबसे बड़े आप व्यापारी हैं, सबसे बड़े आपके लिए इस चुनाव में क्या मुद्दा है? चुनाव में तो मैडम हम क्या बताएंगे, क्योंकि हम पॉलिटिशियन नहीं है। गुजरात के लिए हमने वो मोदी साहब को पहले प्रेफरेंस दिया था, बहुत बड़ा चांस दिया था। लेकिन इस वक्त थोड़ा लगता है कि कंट्रोल नहीं कर पाया गुजरात के लिए। नहीं, खुश नहीं है? खुश तो हम तो खुश को ना खुश की बात नहीं है जी। लेकिन उसने जो 5 साल के अंदर जो भी गुजरात के अंदर हुआ है जी, उम्मीद भी नहीं किया था। आपको पसंद नहीं आया जो हुआ? पसंद मेरे को तो ठीक है, लेकिन हर एक पब्लिक जो है थोड़ा नाखुश है। क्यों नाखुश है इस बार? वो महंगाई और गुंडागिरी है ना। गुंडागर्दी बढ़ा है? गुंडागर्दी तो है ही। कैसा हमने गुंडागर्दी? कुछ अनुभव किया है कि पहले जैसा कंट्रोल नहीं है। इस बार तो क्या है, न्यूट्रल हो जाना चाहिए। क्या करें? न्यूट्रल हो जाना चाहिए। क्या करें? व्यापारी लेके ऐसे कोई नहीं है। महंगाई का जो प्रॉब्लम है ना वो तो है ही। वो लगता है आज चुनाव में निकलेगी? हाँ, 100% निकलेगी। चुनाव में निकलेगी वो? All that glitters is not gold. There could be many political analogies to that. The campaigning drums in 89 constituencies of Gujarat have fallen silent as Gujarat gets all set to poll in its first phase. We move right now from Saurashtra to central Gujarat, and if I'm to look at it and
look at factors which could be the decider in Saurashtra, the 48 seats of Saurashtra that poll in the first phase of polling. I think in terms of sheer factors, caste, Kejriwal, women, youth, and above all, the X factor, Modi. The high decibel first phase campaign has ended, but don't let the tranquility of this shot fool you. The state of Gujarat is bursting at the seam with anticipation. जो 70 सालों में कांग्रेस ने जो एक विकास की नींव रखी थी वो भाजपा ने आके पूरी की है, सही तरीके से पूरी की है। इन 10 सालों में जो एक वैश्विक स्तर पर हमें एक नई पहचान मिली है इंडिया को। प्रत्येक गुजराती बोले थे, अंतर्मन आवाज बोले थे, आ गुजरात मैं बनाऊं। भाजपा ने ये कब को बोला कि ये है आपका सीएम मंत्री, पर मोदी जी के नाम पर बोला है। तो बिल्कुल, वो अगर भाजपा में आ जाता है तो उनको वोट जाएगा। तो कब को ही वोट जाएगा? तो गुजरात और राजकोट की जनता इतनी बड़ी मूर्ख नहीं है कि वो कब को मत दे। हम क्यों कब को मत दे? कब क्या विकास करेगा? कब का क्या है? चाय पी के लोग थ्रो कर देंगे। कब का वही ना यूज एंड थ्रो, तो मोदी जी को भी क्या यूज एंड थ्रो ही करना पड़ेगा ना अब तो। जो मोदी जी का नारा है वो केजरीवाल जी पूरा करके दिखा रहे हैं। पानी का तो बहुत दिक्कत है, अभी भी 8 दिवस के बाद आता है। क्या करेंगे? पानी के तो चाहिए न, पर वोट भाजपा को ही देंगे फिर भी। तो भी पर अच्छा है न, अच्छा लगता है हमको। हमारा चूंटणी आवे है, चूंटणी आवશે બધા આવશે, બરાબર? અને એમ કે અમે આમ કરી દઉં, તેમ કહો, મારી બહેનો, મારી માતાઓ એમ કરે કે અમને બધા મત લઈ જાય। એને ક્યાં ખબર છે મોદી સરકારને કે હું પ્રોબ્લેમ છે બધાને, બરાબર? ખુલ્લા દિલથી સદા કર્યો સૌનો આવકાર। सोमनाथ जो विश्व प्रसिद्ध टेम्पल है और उनके मुख्य अध्यक्ष अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब जी और अमित साहब जी वहाँ ट्रस्टी है, उनके लिए ये सीट जीतनी ये बार 2022 भी अनिवार्य है, क्योंकि इसके बाद भी 2024 में लोकसभा का चुनाव है। उनको देख के ये सीट जीतनी भाजपा के लिए अनिवार्य है। It is an election of two identities, one that wants change, the other assertion, and with the latter stands the tallest politician in the country today. Ahmedabad at night is a beautiful city, full of color, full of character. And it is here that I meet India Today's consulting editor, Rajdeep Sardesai. How are you doing? Welcome to Ahmedabad. Thank you, sir. Thank मेरी you. जन्मभूमि है. It's my home, my birthplace. Your birthplace, That's Ahmedabad. right. My grandparents didn't live too far away from here. What did you eat? What did we eat? Mutton samosas. You know, we ate mutton samosas on the in Bhatia Gali, and then we went to Manik Chowk and had pineapple cheese sandwich, and we ended up with ice cream. चॉकलेट पान आइसक्रीम। आप भी खाइए उसको, चॉकलेट पान आइसक्रीम बहुत Sounds gross. But sounds gross. But आप लोग नॉर्थ इंडिया से आते हैं और आप sir, chocolate pan. That sounds because gross. you don't get it in Delhi and Haryana, you are saying gross. Anyway. Okay, so that's a plug for election on my plate. But having said that, today, actually, the first phase of polling will be tomorrow. And what do you think? 89 seats which go Saurashtra and south of Gujarat. What do you think? Where do you think? Your own exit poll after the first phase. No, it's tough to give a seat-wise exit poll, but let's say this broad picture. In 2017, Congress beat the BJP in Saurashtra and Kutch. Right. 30-odd seats out of 54. So that made a huge difference to the Congress tally. That's where they got a bulk of their seats apart from North Gujarat. South Gujarat, more surprisingly, is where the BJP bested the Congress by a big margin. And that was surprising because there was a sense that the Patidar agitation, one of the epicenters was Surat. And there was a belief that South Gujarat, the Congress would make gains, plus the tribal belt, traditionally a Congress belt. But the BJP held its own in several parts, and even where the Congress won in South Gujarat, the margins were not very high. So that was surprising. I think 5 years later, my sense is Saurashtra
is clearly advantage BJP because of the division in the opposition vote. Because that's the area where I see the Aam Aadmi Party getting maximum vote share that it gets. But sir, I'm coming from Saurashtra and there are many seats where the Aam Aadmi Party is actually cutting into the BJP's vote. And there's also a lot of infighting where the old cadre of the BJP is concerned because they've practically, taken out their own candidates and placed about, I think, 8 seats in Saurashtra where they've taken Congress men and put them there just 1 week before filing nomination. That's right. But the fact is the BJP has, I think this time, meticulously organized its Saurashtra campaign despite the rebels. At the end of the day, people vote, I think, in Gujarat for the BJP and Modi and not for the candidate. And the BJP has chosen congressmen to switch over who they think have that local appeal, have a stronghold in their constituency and thereby win them over. They've also replaced a lot of their sitting candidates, including ministers, and that might benefit them. I think they changed the entire cabinet. That's right. But the main thing, I think, is the split in the opposition vote. I know that the AAP could also take a share of the BJP vote, but I think I agree with the pollsters who say that out of 10 votes that the AAP gets, 6 to 7 will be of the Congress and 3 to 4 will be of the BJP. So that's Saurashtra. In South Gujarat, again, in Surat city, I do think that the Aam Aadmi Party has made some gains. We saw it in the municipal elections. Are they enough to actually win seats? I don't think so. Are they enough to give the BJP some kind of security and safety? Possibly. And in the tribal belt too, where the AAP makes any gains, it'll be more, I think, in terms of vote share and at the cost of the Congress. So I think the one big reason why I give the BJP a huge advantage in 2022 compared to 2017 is just a triangular contest. They can even get a lesser vote share, 45, 46%, and still get more seats. So we are talking about the first phase, and my one final question, you've come from Surat, sir, I've come from Saurashtra. What would be the X factor? If I look at it in Saurashtra, there are many factors, caste, of course, Kejriwal, women, youth, but the X factor is still Modi, where Saurashtra is concerned. What would be your... It is Modi across. Modi, I agree. If I were to look at it, I keep using this word Moditva. So it's not just Hindutva, but it's Hindutva plus Mr. Modi. The personality cult that he's developed in Gujarat. But it didn't work in 2017 in Saurashtra. Because in 2017, Preeti, the local factors in Saurashtra, there was farmer anger over MSP, over consecutive years Patel of drought. agitation. The main thing was the Patel agitation, especially among the youth. And there was a sense that the manner in which Anandiben was removed, Vijay Rupani was brought in, plus it was the first election after Mr. Modi had left Gujarat. And there was a sense of a vacuum. I think now what Mr. Modi has successfully done is played this double engine game in Gujarat. It may not work across India. Across India, you've seen in your home state of Haryana, huge gap between what the BJP does in a Lok Sabha and how they did in a Vidhan Sabha just few months later. But in Gujarat, that attachment, that sense that Modi hai na, Modi ji ke liye denge. So the vote is not even for the BJP. It's nothing. You know, in a way, one of the big questions that will be asked at some stage in Gujarat is, after Modi, who can the BJP retain this kind of dominance? It could, but it then opens and it gives an opening to the opposition. So the real challenge for the opposition, I keep making the parallel with Bengal. Once Jyoti Basu faded away, Mamata Banerjee was able to slowly assert herself because she stayed in the Maidan. If there is any party or leader in particular who can stay and be seen as the magnet for the fight against the BJP in Gujarat, and there is anti-incumbency on the ground, that individual or that party will benefit not this election, but maybe 5-10 years down the line. As for the next election, yeah. And it is a triangular contest. The AAP has made inroads. Thank you, Rajdeep Sardesai, for joining us this go evening. And try the mutton samosas. And he's plugging his show again, but... No, I'm not. It's not my show. I'm plugging that. This is Election Dispatch, sir. I'm plugging... Watch Preeti Chaudhary on Election Dispatch. Please watch Preeti Chaudhary on Election Dispatch and allow her to go and have samosas at Raju Samosewala. Thank you. Thank you for joining us. I don't read the news. I read between the lines to tell you the true version of events, the true story of our times. To document grief
the toughest assignment for any journalist to be from those who matter, Women politicians going to stick up for each other. of those who should matter. I document the truth. I don't distort the truth. I don't glamorize the truth. I don't gloss over the truth. The ghosts of India's contentious medieval history have come knocking again. I hustle for the truth, on the ground, in the newsroom, in the studio. I don't try to grab eyeballs. I inform you to make you see the point. To the Point with Preeti Chaudhary. At these times, only on India Today. कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है. Vulgar. Propaganda. Inappropriate. Unfit for a prestigious event. These words by the Israeli screenwriter Nadav Lapid on the Kashmir Files movie documenting the genocide of the Kashmiri Pandits. Lapid was invited as the chief of jury at the 53rd International Film Festival in Goa. He, however, went on the stage to single out and target one of the most successful films in India in 2022, The Kashmir Files. We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda, vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. Kashmir has never been an integral part of India. What followed was a massive outcry. The truth has bothered certain people, and every time they get an opportunity, they come up with this bizarre thing. But I think what happened on the last day of the stage of International Film Festival is shameful on that behalf of that person. दोस्तों, कल इफी गोवा में वहाँ एक ज्यूरी के चेयरमैन ने बोला कि द कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म है. मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें तो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बन नक्सल्स और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते ही आए हैं. लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात हुआ है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत सरकार के मंच पे कश्मीर को भारत से अलग करने वाले टेररिस्ट लोगों I would say that we have done a lot of reforms on the direct taxes. The corporate tax have been brought down to 22%, and new manufacturing units that are set up to 24 March will only pay 15% tax. So that's a good, it's stabilized. Maybe some reforms are needed on the personal income tax also, because the tax rates go up from 5% to 30%, and then there are a number of surcharges there, and a lot of exemptions are there. So maybe we need to tinker with some of these provisions. It may give relief to some people and may not give relief to some other people. But yes, there is a need to simplify the tax rates. There is a need to simplify the process of the personal income tax. Now, if they say a relief, I don't know what exactly CII means in terms of relief. Because if you look at tax to GDP ratio for our country, we are still very low. And there's a need to have more taxes. But yes, I agree to this front, and I am of a strong view that our taxes should not come from increasing the tax rates, but from expanding the tax base. So our efforts should be there. So all these efforts and capital gains tax also, we need to do something on that. If we do all that, I think it will give relief to some people and also ensure simplification of tax rates. Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny.
This outburst by a Manipal University student came after his professor called him a terrorist. How can you call me like that? No problem. In front of so many people in a class. The Muslim student was called 2611 shooter Kasab by his professor in front of the entire class. Sorry, I told you. You're a professional, you're teaching. Yeah, sorry. The professor, who can be heard offering an apology, has been suspended by the university. We condemn such kind of incident. As you know that we are an Institute of Eminence and we always believe in Sarvadharma, we believe in Vasudeva Kutumbakam and this thing. Appropriate action is being taken care of on that, and we are taking a suitable action and as per the deemed to be fit, and the student is getting counselled and the professor or the lecturer is getting suspended from the system. The university has barred the professor from teaching at the institute and initiated an inquiry.